tales of heroes whose contribution has remained unrecognized. These people were not having much more historical description of events and remain the hidden gems of the freedom struggle in different parts of India. One such hero was a humble farmer from the state of Uttar Pradesh, Gulab Singh Lodhi. He was the unsung hero of the freedom movement of India. Gulab Singh Lodhi was a revolutionary who actively participated in the Indian independence movement and sacrificed his valuable life. His great contribution was marked with a sign of glory in the freedom struggle. Gulab Singh Lodhi was born in the year 1903 at village named Chandika Khera, Fatehpur Chaurasi, Unnao district in Uttar Pradesh. He was born in a middle-class Lodhi Rajput family, a typical rural family. His father, Thakur Ram Ratan Singh Lodhi, was a farmer. Little is known about his childhood and education. He grew up in the turbulent era when the fervor of the freedom movement was at its peak. Gulab Singh Lodhi took active part in the political activities of freedom struggle of Indian independence against the British rule. Gulab Singh Lodhi participated in a procession at Lucknow which marched to the Aminabad Park for hosting the tricolour in August 1935. The park was surrounded by many soldier British troops in order to prevent the hosting in the flag. Many satyagrahas in this flag hosting movement tried to hoist the flag but not succeeded. Gulab Singh Lodhi defied the show of armed force and climbed a tree with the tricolour. As he was hoisting the flag atop the tree, he was shot dead by a British officer in August 1935 during the firing. In this whole of the situation of movement, he hoisted the flag and sacrificed his valuable life on 23 August 1935. He died at Jhandewala Park at Aminabad, Lucknow. The brave and fearless action of the unrecognized and unsung great hero of the Indian freedom struggle always remain memorable in our minds. After that, people started to call the Aminabad Park as the Jhandewala Park. The statue of his great national hero was the result of his great sacrifice at his place. The central government of India issued the postal ticket on the same Shri on the name Shri Gulab Singh Lodhi on 23rd December 2013 in Unnao as a reward for his tremendous sacrifice. I personally pay my sincere regard to this remarkable, unseen and unsung hero of the Indian freedom struggle from my bottom of heart. जैसे कि आप सभी जानते हैं Thank कि you. हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी को याद करना है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय विद्वान डॉक्टर फूल सिंह नरवरिया जी उपस्थित हैं। आइए इस विषय पर इनसे चर्चा करें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या आप किसी ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जानते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष में अपना योगदान दिया हो? बिल्कुल। शहीद गुलाब सिंह लोधी का नाम इसमें उल्लेखनीय है। जी सर, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताने के लिए कष्ट करें। शहीद गुलाब सिंह लोधी का जन्म 1903 को चंदिका खेड़ा फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव में हुआ था और इनके पिता का नाम रामरतन सिंह था। जी, इनकी स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष में भूमिका के बारे में कृपया प्रकाश डालें। शहीद गुलाब सिंह लोधी का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हमारे देश में चल रहा था तो उस समय झंडा सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अमीनाबाद पार्क लखनऊ में इन्होंने ध्वज फहराया, जिसको ब्रिटिश शासकों ने अपना अपमान माना और प्रसोदवश उन्होंने गोली का ऑर्डर दिया और वहाँ पर गुलाब सिंह लोधी शहीद हो गए और ये घटना 23 अगस्त 1933 की है। जी, क्या भारत सरकार ने इनके पहचान के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य किया है? भारत सरकार ने इनके योगदान को देखते हुए 23 दिसंबर 2013 को डाक टिकट जारी किया है और वह अमीनाबाद पार्क जहाँ पर ये शहीद हुए थे वहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है, जहाँ पर सभी
देशवासी आके उनके स्थान पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें बड़ी सारगर्भित जानकारी प्रदान की है। आपको भी धन्यवाद। This is the postal stamp released by Government of India in the honor of Shri Gulab Singh Lodhi ji. And this is the memorial of Shri Gulab Singh Lodhi ji at Ameerabad, Lucknow. So, at last, this whole work is completed with the help of many respected members of the Vidyalaya. I would like to give my immense thanks to respected principal Shri Gaurav Kumar Dwivedi and vice principals Shri Pavan Jain and Shri Manoj Rawat, our senior teacher Shri A.K. Chaudhary and Shrimati Nilanjana Saxena ji, Shri Ajay Kumar Baghel, and at last my social science subject teacher and guide Shri Surendra Pratap Singh sir for all this work. Again, I pay my sincere thanks to all who assisted in work directly or indirectly. Jai Hind!